guys, welcome to this channel. In this session, we are going to do MCQs on the general physics. And in this session, I included only the questions which are frequently asked by the examination in various exams. If you are preparing for any competitive exam in which the questions are asked from the general science, right? So this session will be very helpful for you. So watch the complete session, guys. And if any person visit this channel for the first time, so you can subscribe the channel if you love the content. And yes, we will do 115 MCQs and we will cover these MCQs in the two sessions, right? And this is the first part and the upcoming session will be on the same topic, right? So let us start with the first question, that is Pascal is the unit of. A option is humidity, B is pressure, C option is rainfall and D option is temperature. So the right answer is option B, that is pressure. Pascal is the unit of pressure, right? नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनिट ऑफ वर्क इज. वर्क की यूनिट क्या होती है? ए ऑप्शन इज जूल, बी इज न्यूटन, सी ऑप्शन इज वॉट एंड डी ऑप्शन इज टाइम. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज जूल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एसआई यूनिट्स आर नॉट मैच्ड करेक्टली. नाउ वेरी इजी एंड नाउ ट्राई टू गेस द राइट आंसर. तो ए ऑप्शन इज वर्क की जो यूनिट होती है वो होती है जूल, बी इज द फोर्स, फोर्स की यूनिट होती है डाइन, सी इज द मास, मास की यूनिट दी हुई है किलोग्राम एंड डी ऑप्शन इज द प्रेशर, प्रेशर की यूनिट दी हुई है डाइन. तो अब देखिए हमने प्रीवियसली किया दैट की जो प्रेशर की यूनिट होती है वो होती है पास्कल, राइट? सो द इनकरेक्ट वन इज ऑप्शन डी, दैट इज प्रेशर डाइन, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ए ऑप्शन इज बार, बी इज नॉट, सी ऑप्शन इज जूल एंड डी ऑप्शन इज ओम. So the unit of atmospheric pressure is bar. So option A is the right answer. Next question is which of the following instruments is used to find the location of objects submerged in the ocean. A option is audiometer, B is galvanometer, C option is sextant and D option is sonar. So the right answer is option D, that is sonar. Sonar is used to find the location of the objects which is under the ocean. Next question is intensity of earthquake is measured in. A option is Richter scale, B is decibel scale, C option is pH scale and D option is Celsius scale. So the right answer is option A, that is Richter scale. Next question is in sonar we use. In the previous question we see that sonar is used to find the objects which are submerged under the ocean. So to find that kind of objects, which type of waves are used by the sonar? Your A option is radio waves, B is audible sound waves, C option is ultrasonic waves and D option is infrasonic waves. So the right answer is option C, that is ultrasonic waves. Next question is intensity of earthquake is measured with. A option is barometer, B is hydrometer, C option is polygraph and D option is seismograph. So the right answer is option D, that is seismograph. Seismograph is the device which is used to measure the intensity of earthquake. Next question is the instrument for measuring blood pressure is. A option is tachometer, B is sphygmomanometer, C option is actimeter and D option is barometer. The right answer is option B, that is sphygmomanometer. Next question is what is the name of the lie detecting instrument. A option is polygraph, B is pyrometer, C option is gyroscope and D option is chemograph. So the right answer is option A, that is polygraph is the device which is used to detect the lie. Next question is the weight of the human body is. A option is maximum at the poles, B is equal at all places on the earth's surface, C option is maximum at the equator and D option is more in hilly area than in plains. So the right answer is option A, that is maximum at the poles. Next question is the time period of a pendulum. A option is depends on the mass, B is depends on the length, C option is depends on the time and D option is depends on the temperature. So the time period of a pendulum depends on the length. So option B is the right answer. Next question is who propounded the universal law of gravitation. A option is Newton, B is Galileo, C option is Copernicus and D option is Einstein. So the right answer is option A, that is Newton. Newton gave the universal law of gravitation. Next question is astronaut can stand erect in vacuum because. A option is there is no gravity, B is the atmosphere has high viscous force, C option is the solar wind exerts an upward force
and D option is the atmosphere is very low. So the right answer is option A, that is there is no gravity. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सैटेलाइट कॉन्टिन्यूज टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। हम सभी जानते हैं जो सैटेलाइट है वो पृथ्वी की जो है इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो कौन सी फोर्स होती है जो उस पर एक्ट करती रहती है ताकि वो उसके जो है सराउंड जो रिवॉल्व करते रहें और नीचे की तरफ ना गिरे। जो ए ऑप्शन इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बी इज सेंट्रीपिटल फोर्स, सी ऑप्शन इज ग्रेविटेशनल फोर्स और इट्स एब्सेंस, एंड डी ऑप्शन इज सम अदर फोर्स। So the right answer is option B, that is centripetal force. Next question is a pendulum clocks become slower in summer because A option is days are longer in summer, B is there is a friction in the coil, C option is the pendulum elongates, and D option is the weight of the pendulum changes. So the right answer is option C, that is the pendulum elongates. Next question is when will man sitting inside a lift feel himself heavier? A option is when the lift is moving up rapidly, B is when the lift is coming down rapidly, C option is when it is moving up with uniform velocity, and D option is when it is coming down with uniform velocity. So the right answer is option A, when the lift is moving up rapidly. Next question is the escape velocity of the earth is A option is 15.0 km per second, B is 21.1 km per second, C option is 7.0 km per second, and the last option is 11.2 km per second. So the escape velocity of the earth is option D will be the right answer, that is 11.2 km per second. और आप इसके साथ साथ जो है एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून को भी याद रख लीजिए, वो होती है 2.4 km per second. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिंसिपल ऑफ द वर्किंग ऑफ द वॉशिंग मशीन इज A option is centrifugation, B is dialysis, C option is reverse osmosis, and D option is diffusion. So washing machine work on the principle of the centrifugation. So option A is the right answer. Next question is as soon as the train starts, the head of the passenger seated inside it leans backward. जब जो है पैसेंजर बस में या ट्रेन में बैठा होता है, तो जब जो ट्रेन या बस जो है चलना शुरू होती है तो आपने देखा होगा, सभी ने ये फील किया होगा कि एक झटका सा महसूस होता है पीछे की तरफ इंसान को। तो उस चीज के पीछे क्या रीजन है? जो ए ऑप्शन इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, बी इज इनर्शिया ऑफ मोशन, सी ऑप्शन इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड द लास्ट ऑप्शन इज कंजर्वेशन ऑफ मास। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि हमारी बॉडी रेस्ट में होती है और वो कोशिश करती है कि वो रेस्ट में ही रहे, लेकिन जैसे वो चलना शुरू होती है तो इसकी वजह से जो है उसको एक धक्का सा फील होता है पीछे की तरफ। ओके, next question is which of the following is a vector quantity? A option is time, B is speed, C option is displacement, and D option is distance. So the right answer is option C, that is displacement. Next question is force is the product of A option is mass and velocity, B is mass and acceleration, C option is weight and velocity, and D option is weight and acceleration. So the right answer is option A, B, that is mass and acceleration, that is F equal to m into A. Okay. Next question is which form of energy changes into electric energy in wind power? A option is kinetic energy, B is potential energy, C option is solar energy, and D option is radiation energy. So the right answer is option A, that is kinetic energy. Next question is conservation of energy means that A option is energy is created and destroyed, B is energy can be created, C option is energy cannot be created but can be destroyed, and last option is energy can neither be created nor be destroyed. So the conservation of energy means that energy can neither be created nor be destroyed. So option D is the right answer. Next question is which one of the following is a scalar quantity? A option is momentum, B is pressure, C option is velocity, and D option is work. So the right answer is option D, that is work. Work is a scalar quantity and the remaining three are the vector quantity. Next question is the tendency of a liquid drops to contract and occupy the minimum space is due to A option is spherical tension, B is viscosity, C option is density, and D option is vapor pressure. So the right answer is option A, that is surface tension.
और इसी सेम जो है रीजन के ऊपर ही, सेम लॉजिक के ऊपर ही ये भी क्वेश्चन बनता है दैट किसकी वजह से जो है, जो रेन ड्रॉप होती है या लिक्विड ड्रॉप होती है, उसकी जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है। तो वो भी सेम इसी रीजन की वजह से होती है, दैट इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिंसिपल ऑफ द वर्किंग ऑफ द हाइड्रोलिक ब्रेक्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स इज। A option is the Archimedes principle, B is the Newton's law of motion, C option is Bernoulli's principle, and D option is Pascal's law. So the right answer is option D, that is Pascal's law. जो हाइड्रोलिक ब्रेक होती है ऑटोमोबाइल की, वो वर्क करती है ऑन द पास्कल्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द क्वांटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस व्हाट रिमेन अनचेंज्ड। A option is volume, B is weight, C option is mass, and D option is density. So the right answer is option D, that is density. Next question is the spherical shape of a raindrop is due to. तो मैंने आपको ये प्रीवियस ही बताया दैट स्फेरिकल शेप होती है रेनड्रॉप की या लिक्विड ड्रॉप की, वो किसकी वजह से होती है, सरफेस टेंशन की वजह से, राइट। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रीम सेपरेट्स फ्रॉम मिल्क आफ्टर चर्निंग ड्यू टू। A option is gravitational force, B is adhesive force, C option is centrifugal force, and D option is none of the above. So the right answer is option C, that is centrifugal force. और हमने previous centrifugal force पे या centrifugation पे जो है एक क्वेश्चन किया that कि जो वॉशिंग मशीन होती है वो भी कौन से प्रिंसिपल वर्क करती है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रिंसिपल पर, राइट। और सेंट्रीपिटल फोर्स पे हमने एक क्वेश्चन किया that कि जो सैटेलाइट होते हैं वो अर्थ के जो है रिवॉल्व घूमते रहते हैं, तो उन पर कौन सी फोर्स एक्ट करती है, वो करती है सेंट्रीपिटल फोर्स। सो कुछ एक ऐसे पॉइंट्स हैं जो जिन पर जो है बहुत टाइम जो है क्वेश्चंस रिपीट किए जाते हैं एग्जाम में, तो ये तो आपको बिल्कुल टिप पर याद होने चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज इजियर टू स्विम इन द सी देन इन रिवर्स बिकॉज। ए ऑप्शन इज सी वाटर इज सलाइन, बी इज सी वाटर इज डीपर, सी ऑप्शन इज सी वाटर इज हैवियर, एंड डी ऑप्शन इज सी वाटर इज लाइटर। So the right answer is option A, that is sea water is slime. Next question is oil spread on the surface of water because A option is oil is denser than water, B is oil is less dense than water, C option is oil has a more surface tension than water, and D is oil has less surface tension than water. So the right answer is option D, that is oil has less surface tension than water. Next question is water has maximum density at. A option is 373 Kelvin, B is 277 Kelvin, C option is 273 Kelvin, and D option is 269 Kelvin. So the right answer is option B, that is 277 Kelvin. And listen guys, इस क्वेश्चन को जो है एग्जाम में कई बार जो है इन द फॉर्म ऑफ सेल्सियस में पूछा जाता है। ओके, मतलब यहाँ पर केल्विन में वैल्यू दी हुई है, वहां पर आपको सेल्सियस में वैल्यू दी होगी। तो वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है वो होती है एट द 4 डिग्री सेल्सियस। ओके, 0 डिग्री सेल्सियस रहता है 273 केल्विन के बराबर। सो इट मीन्स कि 4 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर हुआ, सो 277 केल्विन के बराबर। ओके, तो कुछ एक बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए ताकि जो है आप क्वेश्चन को राइट कर पाओ एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर हैज मैक्सिमम रिलेटिव डेंसिटी एट द फॉलोइंग टेम्परेचर। सेम क्वेश्चन है, अब यहाँ पर जो है सेल्सियस में वैल्यू दी हुई है। सो मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि मैक्सिमम डेंसिटी कौन से सेल्सियस पे होती है वाटर की, सो वो रहती है 4 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, 4 डिग्री सेल्सियस और 277 केल्विन। ओके, next question is a piece of ice is floating on a glass of water. How will the water level be affected when the ice melts? A option is rise, B is fall, C option is remain the same, D option is first rise then fall. So the right answer is option C, that is remains the same. उसमें कोई भी वाटर लेवल में कोई भी चेंज नहीं होता जब जो है आइस जो है मेल्ट भी हो जाता है उस पानी के गिलास में। ओके, next question is the time taken by the sunlight to reach the surface of the earth is approximately. A option is 4.2 second, B is 4.8 second, C option is 8.5 minutes, and D option is 3.6 hour. So the right answer is option C, that is 8.5 minutes. And yes guys, if you love the content, so please don't forget to like the video, right? Next question is the mirror used for shaving is. A option is concave mirror, B is plane mirror, C option is convex mirror, and D option is none of these. So the right answer is option A, that is concave mirror.
Next question is speed of light will be minimum while passing through. A option is glass, B is vacuum, C option is water, and D option is air. So the right answer is option A, that is glass. And here I mentioned that the speed of light depends on the refractive index of the medium. और जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो मैक्सिमम कहाँ होती है, आपको ये अच्छे से याद रखना है. सो वो मैक्सिमम होती है वैक्यूम में, राइट. और स्पीड ऑफ लाइट मिनिमम कहाँ होती है, जिस मटेरियल का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है. इट मीन्स ये मिनिमम रहेगी डायमंड में. यहाँ पर मैंने कुछ एक मेंशन किए हुए पॉइंट्स, जैसे कि वैक्यूम में सबसे ज्यादा रहेगी, देन एयर, देन वाटर, देन ग्लास एंड आफ्टर दैट डायमंड, राइट. और अगर हम साउंड की बात करें तो साउंड का अपोजिट में आएगा. जैसे स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम रहती है वैक्यूम में, इट मीन्स जो स्पीड ऑफ साउंड होगी वो मिनिमम कहाँ पर रहेगी, वो रहेगी मिनिमम वैक्यूम में. ओके, सो इस पॉइंट को काफी अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में स्पीड ऑफ साउंड पूछी जाती है, कई बार स्पीड ऑफ लाइट पूछी जाती है, और ये मैक्सिमम जो है कंफ्यूजन क्रिएट करता है. ओके, और क्वेश्चन जो है गलत होता है, राइट. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज शॉर्ट साइटेडनेस इज करेक्टेड बाय. ए ऑप्शन इज यूजिंग कन्वेक्स लेंस, B is using concave lens, C option is using plain concave lens, and D option is using plain glass. So right answer is option B, that is using concave lens. और short sightedness को क्या कहा जाता है? So it is called as myopia. So यहाँ पर जो है ऐसे भी पूछा जा सकता है question that myopia is corrected by so using the concave lens. Okay. Next question is what is the least distance of clear vision for the normal eye? A option is 10 cm, B is 15 cm, C option is 20 cm, and D option is 25 cm. So the right answer is option D, that is 25 cm. Next question is an astronaut sees the color of the sky. जो एस्ट्रोनॉट होता है उसको कलर, स्काई का कलर जो है किस तरह का जो है दिखता है. A option is blue, B is white, C option is black, and D option is red. Right answer is option C, that is black. Next question is when light moves from one medium to another, which of the following remains unchanged? A option is intensity, B is speed, C option is wavelength, and D option is frequency. The right answer is option D, that is frequency. Next question is where in man's eye is the image of an object formed? हमारी आंखों में किसी भी चीज की जो है, किसी ऑब्जेक्ट की जो है इमेज कहाँ पर फॉर्म होती है? A option is cornea, B is iris, C option is pupil, and D option is retina. The right answer is option D, that is retina. Next question is in what form does the signal flow in optical fiber communication? A option is light wave, B is radio wave, C option is microwave, and D option is electric current. The right answer is option A, that is light wave. ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में जो है जो सिग्नल होता है वो ट्रेवल करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट. Next question is mirage is caused by. A option is interference of light, B is diffraction of light, C option is polarization of light, D option is total internal reflection of light. So the right answer is option D, that is mirage is caused by the total internal reflection of light. So with this question guys, I end up this session. So I hope that you love the content. So please don't forget to like the video and stay tuned with this channel for more videos. We will meet soon in the next session. Till then, bye bye and take care.